कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, और दिल्ली की सड़कें हों तो रेस जो है वो थोड़ी और लंबी हो जाती है। 2.5 घंटे रोड पर ट्रैफिक से जूझने के बाद, लेकिन मौसम का लुत्फ उठाते हुए मेरे मन में अनेकों संकल्प आ रहे थे, और वो संकल्पों के सैलाब के अंदर भावनाओं के झूले पर मैं झूल रहा था। एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल। मैं कॉन्वेंट स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पर मैं टीचर्स और सबको एड्रेस करने गया था उनके एनुअल डे पर। तो उन्होंने बड़े प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यू नो सर, दिस इज वन ऑफ द स्कूल्स दैट हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल इन द कंट्री। आई टोल्ड देम, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन यू सी आई वुड बी वेरी वेरी प्लीज अगर आप ये बोलते कि दिस इज वन ऑफ द स्कूल्स दैट हैज प्रोड्यूस्ड द हैप्पीएस्ट चिल्ड्रन इन द कंट्री, बिकॉज दोज पीपल हु आर हैप्पीएस्ट आर गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल। दोस्तों, टुडे इन दिस पर्टिकुलर जर्नी वी आर क्रिएटिंग पीपल हु आर वेरी इंटेलेक्चुअल। हम उनकी सक्सेस को, उनके अचीवमेंट्स, उनके नेचुरल प्रोसेसेस के ऊपर गेज करते हैं, लेकिन आई बिलीव बिसाइड्स क्रिएटिंग पीपल हु आर वेरी इंटेलेक्चुअल, टुडे आवर चिल्ड्रन एंड आवर पीपल आर इमोशनली लेस empowered, they are emotional fools. And that is why in today's beautiful journey I'm going to take you on a very powerful resilient journey. In this scientific evidence जो दिखाई गई in study of more than 14 million children, what they showed was that while 49% of the personality of a child is determined by the genetics, it's equally important for us to understand that 51% is determined by the environment and the thoughts that we give to a child. एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है, and that is a story of a young child who wanted to be an archer. वो तीरंदाजी में बहुत शौक रखता था, और दोस्तों तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पार्ट लेते हुए वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना। लेकिन एज ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कॉम्पिटिशंस, उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर अभिमान आने लगा। ही बिकेम वेरी प्राउड एंड ईगोइस्टिक। लोगों का उनको हराता और हराकर उनका उपहास करता, यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें बोला कि इफ यू आर सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, हम आपको चैलेंज करते हैं कि इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको हराकर दिखाइए। उसने कहा दिस इज इजी फॉर मी, आई कैन इजीली डू इट। मैं तो बड़े बड़े लोगों को हराया है। और वो यंग लड़का जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है कि आई चैलेंज यू इन द कॉम्पिटिशन ऑफ बो एंड एरो। उसने कहा मुझे हराकर क्या करोगे, आई एम सो ओल्ड। तो ही सेड कि पीपल से ओनली व्हेन आई डिफीट यू आई विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने कहा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। दोनों ऐसे ही खुले मैदान पर आए, और उस लड़के ने अपना तीर निकाला और निकालकर निशाने पर एक्यूरेट लगाया, और दूसरा तीर निकाला और निकालकर पुराने निशाने को भेदते हुए एक्यूरेट लगाया, और मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने एक ही कमान में 2 तीर निकाले और एक्यूरेटली उनको एक के बाद एक छोड़ा, और उससे आधे समय में करके दिखा दिया, और कहा बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। उसने कहा आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज। उसने कहा आओ मेरे पीछे। वो उसको गांव के कोने में ले गया। हजारों फीट गहरी खाई थी, 2 बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे, और बीच में पतली सी पगडंडी जा रही थी, और वो झूल रहा था ऐसा कि किसी का इम्बैलेंस होकर वो गिर जाए। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी कामली एंड कंपैशनेटली उस पगडंडी के ऊपर चलने लगा, और बीच पहाड़ों के ऊपर आकर वो उस खाई के ऊपर आकर खड़ा हो गया और कहा मेरे पीछे आओ। उस लड़के के माथे पर पसीने थे, उस लड़के का हाथ कांप रहा था, झूल रहा था वो। उसने कहा कहीं मैं गिर ना जाऊं, फिर भी वो आगे आने लगा, और उसने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, तुम आओ। बीच खाई के ऊपर आकर जब वो खड़े हुए, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और कहा कि पहला चरण देखो मैं क्या करता हूं। उसने तीर निकालकर एक पेड़ पर दोनों पहाड़ों के बीच में एक्यूरेट निशाना लगाया, और कहा तुम ऐसा कर सकते हो। उस लड़के ने माथे से पसीने पहुंचे, और पहुंचकर अपना निशाना साधने की कोशिश की, हाथ कांपते हुए, मन भटकता हुआ। जब उसने अपना तीर छोड़ा,
वो तीर निशाने के आसपास भी दोस्तों कहीं नहीं पहुंचा और खाई में विलीन हो गया। उस लड़के को मालूम था वो हार चुका है। He knew the child is defeated. उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में पड़कर कहा कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, असल में विश्व में सर्वश्रेष्ठ अब है आप हैं। ध्यान से सुनिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया। उसने उसको बड़े प्यार से उठाया और उठाकर अपने गले लगाया और कहा कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो हर परिस्थिति में तुम्हें निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए जरा सी परिस्थिति विकट होती है और तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दी वर्ल्ड, तुम्हें सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और उसने कहा जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। लेकिन वही मन जब हमारा सशक्त और पावरफुल होता है, वो परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। दोस्तों, ये सारा खेल हमारा मन का है। अगर आज हम अपने मन को एम्पावर करते हैं, वी कैन मास्टर एनीथिंग इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। आज दोस्तों, हमारे सामने जब हजारों लाखों बच्चे हमारे पास आते हैं, उन सबको हम संकल्पों का घृत डालकर, पानी डालकर उनके जीवन को हम उपजाऊ, उनकी बुद्धि को हम उपजाऊ बना सकते हैं। और इसकी शक्ति केवल और केवल संकल्पों में है। दैट्स द पावर ऑफ वन थॉट दैट ईच वन ऑफ अस इज गिफ्टेड। आज की इस यात्रा में, इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, आई एम नॉट गोइंग टू नरेट यू 10 or 20 पॉइंट्स दोस्तों, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू नरेट powerful 5 stories of my life, those profound stories that have changed my life and lives of millions of people with whom I have interacted. अगर आज आप इन बातों को साइंटिफिक रूप से समझ कर जाएंगे, you will be able to transform not only your own life but lives of millions and millions of children who are touched by your hand and by your thoughts. My dear friends, this is my story. How would you feel if you know that the person who is speaking to you does not have right side of the brain? How would you feel if you know that the doctor who is speaking to you has lost his 80% of the hearing and works with only 20% of the hearing for last 21 years? And how would you feel if you know that the person who is speaking to you has 4 screws drilled in his spine? He has difficulty in standing and walking even at this particular moment, but still he is able to start his day at 3:30 a.m. in the morning every day, with meditation, with a lot of yoga, doing exercise every day, operating more than 60 cases in a single day, traveling globally, sleeping for only 4.5 hours for last 25 years, my dear friends. That's the power of one thought. That's the power of resilience that each one of us is gifted with. आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के अंदर ही इस संकल्प शक्ति को दोस्तों जागृत करने के लिए आया हूं। असंभव को भी संभव करने की शक्ति, असाध्य को भी साध्य करने की शक्ति दोस्तों, चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की शक्ति दोस्तों, ये किसी गुरु, महात्मा, किसी प्रवचन या सदगुरु की प्रॉपर्टी नहीं होती दोस्तों। ये आप जैसे लोगों के अंदर शक्ति है जो मात्र एक संकल्प को परिवर्तित करके अपने जीवन के अंदर और हजारों लाखों बच्चों के मौन को, उनके जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं, केवल और केवल अपने संकल्पों को दोस्तों परिवर्तित करके। आप ही की तरह मैंने अपने जीवन को आरंभ किया like a lovely child. My pictures almost 50 years back when I was there in my childhood in my nursery school. Not even the school, in the nursery school. I always wanted to be a leader. I always wanted to be a teacher. Lot of joy, lot of innocence, lot of love and happiness in my life. और दोस्तों मैं भी बहुत खुश था, सोच रहा था जीवन इसी का नाम है। लाइफ के अंदर आनंद था, लाइफ के अंदर सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, as everybody is programmed in today's world, I was also programmed to chase success in my life.
मैंने कहा बेटा इससे कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी भागने का नाम है, जिंदगी दौड़ने का नाम है, परीक्षाओं का नाम है, भागो दौड़ो और अचीव करो। और दोस्तों मैंने भी भागना आरंभ कर दिया। A very good meritorious student in my school, in my Delhi school, terrific student, always a good student। दोस्तों मैंने सब कुछ अचीव किया। अपनी 12th के बाद मैंने IIT को भी क्लियर किया, अपने MBBS को भी क्लियर किया। आई क्लियर बोथ द एग्जाम्स एंड टुक अप टू मेडिसिन बाय चॉइस। मेडिसिन खत्म करने के बाद 1998 में आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट डॉक्टर्स इन माय कंट्री। With 17-18 gold medals, 5 silver medals, I could achieve and attract success naturally. But as I was programmed, किसी ने बोला बेटा डॉक्टर बन गए हो, स्पेशलाइज किसमें करोगे? और दोस्तों मैंने अगले दिन फिर दौड़ना चालू कर दिया। मैंने अपनी MD मेडिसिन को भी खत्म किया। I became one of the youngest MD physicians, went to America, started studying in Hopkins, came back doing gastroenterology. मन नहीं लग रहा था, I wanted to come back and ultimately in 2001 I came back and दोस्तों I cleared and became one of the youngest cardiologists in my country. I could achieve success naturally. Life was just picture perfect, absolutely perfect. Money, pride, power, position, everything was just there in my life. I think this is what a dream life was. A spiritual person, a day which was always balanced, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था, everything was going on absolutely perfect, and I think this is a beautiful life. But you know, one day came in my life that changed my life forever. That completely changed my life forever, and that day was 20th March 2003. I came home after operating for almost 1.5 days. That was the schedules that we used to have. We used to start operating at 6 a.m. and used to operate till 3 a.m. next day. And I came home that day with severe headache, very, very tired, fatigued. And that day, and I came back, my mother said, she's a gynecologist, said, Beta, khana khaoge? I said, no, I want to have rest. There is unusual headache that I am having. After 2 hours of rest, when I got up, she gave me a cup of ice cream in my right hand, and it was 20th March, 6:30, 7:30 p.m. in the night. The moment she handed over the cup, that cup fell from my hand and I collapsed on the floor of my home. Everything came shattering down. I was throwing massive seizures, uncontrollable seizures. I lost my consciousness. I was lifted by my sister, by my parents, rushed to my hospital, fighting for life and death. I was resuscitated the whole night. Doctors were working on me. And next day, when I regained my consciousness, you would be shocked to see this is what I had in right side of my brain. A large infective mass in right brain diagnosed as multi-drug resistant tuberculosis. 19 drugs available at that time, imagine. I was resistant to 18 drugs at that time. Sensitive only to one injection, amikacin. Every day, the person anesthetist would come and give injection to me in my hand. And 150 injections that took away my hearing. My day used to start with 16 tablets. That was my starting of the day. Not with a breakfast, but with 16 tablets, 8 in the morning and 8 in the evening. And I was fighting and striving for my life and death. I had a lot of pain. दर्द होता था. I literally wanted कि कोई मुझे चाकू दे और अपने ब्रेन को मैं ऐसे काटूं और राइट साइड ब्रेन निकाल कर फेंक दूं. That was the severe kind of pain that I used to have, but I never experienced sorrow in my life. मन को कभी मैंने दुखी नहीं होने दिया. In that moment of pain, I kept on writing books also. I studied my cardiology and became one of the youngest cardiologists, my dear friends. And ultimately, that day when I was in ICU, I was thinking, what has gone wrong? सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर, where the things had gone wrong, I knew that I had landed myself in pandemic of personal mismanagement. Check your lives today. अपनी जिंदगी को देखिए. Where our lives are leading today. Ultimately, we program our child to perform so much that work and life balance is lost in our life. जीवन में काम करते करते कहीं ना कहीं जीवन के अंदर संयम का होना, बैलेंस का होना दोस्तों, उसको हम अपने जीवन में दोस्तों खो देते हैं. That day, lying down in the ICU, I knew that somewhere 2 words have become synonymous with our life.
And these two lines and two words that have become synonymous with our life is I am busy and I don't have time. jaldi karo, time nahi hai, busy hu. That is the programming that we have gifted to our children and to everybody whom we are educating today. Our whole education system has practically become rotten by programming the mindset of our children that you have to run and you have to only achieve success in our life. I was thinking, this is not what I had been programmed for. Today, we are called human beings, but human beings have been changed into what is called as human doing. Life is simple, but today we have made a mess out of it. और दोस्तों उस दिन मैं आईसीयू में बड़े मुस्कुरा रहा था. My mother said, बेटा कल तो तुझे इतने massive seizures हुए हैं और तू मुस्कुरा क्यों रहा है? And I very smilingly said, मम्मी, God has made our life very simple. But आज मैं देख रहा हूँ जलेबी सी जिंदगी उतर चुकी है. तो उन्होंने कहा इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? And मैंने बड़े प्यार से उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि जब जलेबी सी उलझ चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी के अंदर डुबकी लगा ली जाए, जिंदगी के अंदर कुछ मिठास. And that is the day I started changing my life. I came out of the emergency mode. I started choosing happiness in my life. I started experiencing happiness in my life, my dear friends. That is what I want to tell you today. As leaders of your own organizations, I will put forth one question to each one of you. To each one of you, and every single person sitting in this hall has to answer this question. सब लोग इस क्वेश्चन के अंदर एक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. बच्चों के लेते हैं ना, सीबीएसई वाले बच्चों के लेते हैं, आप लोग अपने बच्चों के टेस्ट लेते हैं. तो आज हमें भी जिंदगी का एक टेस्ट देना चाहिए, and that will bring your whole life in the right perspective. So are you ready? Yes or no? Please answer everybody. Yes. My question is very simple to you. It's a multiple choice question, and I'm going to give you also 3 answers for that. And if you guys have a 4th answer, you can easily pound on me and tell me that this is my 4th answer. And question is, why do you work in your life and what do you want your children to achieve in your life? आप अपनी जिंदगी में क्यों काम करते हैं? My first choice is you work in our life for money. हम अपनी जिंदगी में पैसे के लिए काम करते हैं. Important है. Without money, we cannot achieve a good life. We cannot have money. We cannot have food. We cannot have a car or something like that. So many things in life. So money is important. हम अपनी जिंदगी में खुशी के लिए काम करते हैं. The second choice. And the third one is हम अपनी जिंदगी में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं. So each one in this hall has to choose one answer out of this. So who all people in this particular gathering choose कि हम लोग अपनी जिंदगी में पैसे के लिए काम करते हैं? Raise your hands. Come on. Any takers for that? You can choose. Yes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's perfect. Perfect. That's very fine. कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं वो अपना हाथ उठाइए. प्लीज रेज योर हैंड्स. मे बी राउंड अबाउट 60 और 70 पीपल. सर इनका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा. आई विल बी अ रिच गाय. कौन कौन खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं? रेज योर हैंड्स. ओके, ऑलमोस्ट एवरीबडी रेजेस योर हैंड कि हम पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं. दैट्स एक्साइटिंग. वंडरफुल. ऑलमोस्ट 99% से. और यही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसके 3 आंसर दूंगा. यदि चौथा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी ने इस चीज को पॉइंट नहीं किया. और मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए. लाउडर प्लीज. खुशी के लिए, खुशी से? खुशी से. दैट्स द प्रॉब्लम इन अवर एजुकेशन सिस्टम. टुडे वी ऑल आर प्रोग्राम्ड टू चेज हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. बच्चों को आज हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में. हमको बता देते हैं कि जब आप ये अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, जब आप ये चीज अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे. एंड इन दिस होल प्रोसेस वी आर पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस, whereas the truth is the real life is not chasing happiness but creating happiness every moment in your life. And that is the first message that I want to give you, that life is a journey and happiness is not a destination, my dear friends. Create and choose happiness
every moment in your personal and professional life. These are not institutions of education, these are institutions of joy. These are temples of joy where you are grooming those beautiful souls, teaching them not only to be brilliant emotionally, but also to be happy in their lives. That's the beauty that we have to create in our life. My dear friends, I want to tell you that your happiness will never depend on how much you have. It will only depend on how satisfied you are in your life. So, we must choose happiness, and that is what I changed that particular day in my mindset. I started creating happiness in my mind, and today I want to tell you that if we change nothing, nothing is going to change in our life. So let me unravel the power of thought and those beautiful 5 stories, those beautiful, wonderful stories that are going to leave you with a profound message. And let me tell you, this scientific journey is going to be one of the most revealing journeys of your life. Let me explain to you scientifically. Each one of you and your children in one day is typically generating 50,000 to 70,000 thoughts. And out of those 50 to 70,000 thoughts, unfortunately, 95% of our thoughts are repetitive, are negative, and are waste thoughts. This is what Stanford University research clearly shows us. Imagine if 95% of our thoughts are repetitive, negative, and waste, only 5% of our thoughts are positive and powerful. This explains the quality of our existence. अगर आज एक फैक्ट्री के अंदर 100 में से 95% प्रोडक्ट्स यूजलेस और नेगेटिव हैं, you won't call it as a efficient factory. And why this is important is because each thought that you are thinking is giving you a behavior. आपका एक एक संकल्प आपके जीवन में आपको व्यवहार देता है. The way you think is the way you behave, and the way you behave is the way you feel and make others feel. जिस दिन मूड अच्छा है उस दिन हमारा बिहेवियर पावरफुल एंड पॉजिटिव होगा, उस दिन हमारी फीलिंग्स वंडरफुल होंगी, उस दिन छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करेंगे, हम लोग बच्चों को एम्पावर करेंगे. और जिस दिन हमारा मूड खराब है उस दिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? वी आर इन अ फॉल्ट फाइंडिंग मूड. People will say he's in a mood, don't go near him, everything will be wrong, he is not going to really be helpful. और हम लोगों को पनिश करेंगे छोटी छोटी चीजों पर. We will rout them. That is why it is important to understand that our thoughts are changing our behavior, and our behavior is being changed by is also manifesting in change of our feelings. That is why thoughts are creating our future. एक एक संकल्प हमारा हमारे अपने जीवन और हमारे भविष्य का निर्माण करता है, but only when our thoughts are radiating outside. And today the magnetoencephalogram, this beautiful machine, clearly proves that our thoughts are not just contained within our brain, but they are radiating outside. And where are they acting? They are acting on our own body. They are acting on our genes. They are manifesting and programming our complete genetic makeup. Your thoughts, आपके विचार, बच्चों के विचार, उनके संबंध, उनके relations पर भी act करते हैं. The kind of interpersonal relations that we are having in our family, in our school, is completely dependent on the quality of our thinking. And not only this, our thoughts are also responsible for creating the environment, the food, the nature and water. Every single aspect of our body, of our life is being affected by our thoughts. और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विचारों की शक्ति के द्वारा आप अपने बच्चों का, अपने जीवन का, अपनी लाइफ का, भविष्य को कैसे निर्माण दोस्तों कर सकते हैं. This is the power that we are gifted with. Today, science clearly tells us that our mom and dad are not our limit. It is not necessary कि अगर हमारे परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है, अगर हमारे परिवार में किसी को इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, तो those disorders are also going to manifest in our children. No, today the science of epigenetic tells us merely by our thoughts we can change the expression of our genes.
We can change the expression of our genes, and this was shown by Dr. Dean Ornish. ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको क्लियरली और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लिया जो लोग इलाज के लिए रेडी नहीं थे, और उनको केवल पॉजिटिव लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री लिविंग और मेडिटेशन के बारे में सिखाया। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ओनली विद इन 3 months उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में बताया गया, उनकी कैंसर कॉजिंग जीन सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हो गई और उनकी प्रोटीन बिल्डिंग जीन वो अप रेगुलेट हो गई। और यही नहीं, 3 महीने के अंदर 500 से भी ज्यादा जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ, और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो सब डाउन रेगुलेट हो गई, merely and merely by changing your thoughts, केवल और केवल विचारों को परिवर्तन करने के द्वारा। दोस्तों, this is the power that we are gifted with। इसी से प्रेरित होकर we started doing wonderful experiments in our lab, and here comes my second story, which was the year of 2018. This was the story of which showed me the power of healing and the power of relations. It was Saturday evening, 9:30 p.m., 2018 year, and I was about to leave my hospital. It was almost, we had operated more than 50-60 cases, and suddenly we had a 22-year-old young boy with a massive cardiac arrest. एक young लड़का, 22 साल का लड़का, massive cardiac arrest के साथ मेरे हॉस्पिटल में, मेरी कैथ लैब में लाया गया। He was having a pulse which was not recordable, blood pressure which was not recordable, his ECG was a flat line, and I was asked to operate on that person, on that young boy. मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, what am I going to do? But still they told me कि डॉक्टर गुप्ता प्लीज गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसको अपनी कैथ लैब की टेबल पर लिया, वेंटिलेटर पर भी डाला, आर्टिफिशियल पेसिंग सिस्टम पर डाला, उसकी आर्टरीज को एंजियोग्राफ किया, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी। It took me 1.5 hours, 2 hours to took out thrombus of each of the artery, and ultimately after 1.5 hours I was able to achieve a blood pressure of only 50 to 60 millimeters of mercury. मन कह रहा था ये बचेगा नहीं, but somewhere in my heart I knew that he's a young boy, he might just make it. और इसी मन के संकल्पों के अंदर मैंने उसको आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। Next day when I went for rounds, you would be surprised that young boy was sitting absolutely conscious in his bed. He had recovered magically. His parents were happy, students were happy, sisters were happy. I was happy that this is a life saved, but that was one of the most disturbing days of my life. And I'll tell you why. Because I was thinking, what has gone on wrong in this young boy? ये स्मोकिंग नहीं करता, इसको डायबिटीज नहीं है, इसको हाइपरटेंशन नहीं है, इसके लिपिड्स नॉर्मल है, इसको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। He had a heart attack at the age of 22 years. I said I must talk to this person. I went. मैं उसके पेरेंट्स के पास गया, मैंने कहा ये लड़का मैरिड है 2 साल से, 4 महीने की इसकी बच्ची है, इसकी वाइफ को बुलाइए, I want to speak to both of them. His parents took me aside and said, सुनिए क्या बोला। उन्होंने कहा सर, his wife won't come. I said why? Said they are on the verge of divorce. Said 22 years and divorce? They said yes, there is a verge of divorce. इन्होंने फाइल कर दिया है, 1 साल बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। I had no words. With my folded hands, I asked his father to say to call that young lady. मैंने कहा बुलाओ उस लड़की को फोन करके, I really want to speak to both of them. Reluctantly they called, and that young lady came 1.5 hours later with her 4-month-old ageless daughter. दोनों को मैंने आईसीयू में बिठा दिया, and listen what I talked to them. I said, what is going on wrong in your life? क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर? Where are the things going wrong? Look what he said. He said, sir, we both earn a 6-digit salary. I drive a Mercedes. We have a 4-bedroom plush apartment. There is no dearth of money. Everything materialistic we have. जीवन में जो चीज हम बेस्ट इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे पास है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर फॉर लास्ट 2 years. हमको टाइम ही नहीं मिला कि हम एक दूसरे के साथ वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप करें, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ईच अदर, to understand how we are behaving, the way our lives are going,
what feelings we are going through, इतना समय हमको था ही नहीं। हम पूरे दिन टेक्नोलॉजी, अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स, अपने जीवन के अंदर भागते चले गए, लेकिन अपने जीवन के अंदर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। आई सेड परफेक्ट। उन्होंने कहा हम सेपरेट होना चाहते हैं। मैंने कहा हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे कहने से केवल 2 काम करोगे मेरे लिए 1 महीने के लिए? They looked at each other and said, सर आप कहते तो हम जरूर करेंगे। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए तुम दोनों यहां से जब जाओगे, रोज रात को साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ करो। स्टार्ट हैविंग अ डिनर टुगेदर फॉर 30 मिनट्स, अ ई फ्री डिनर, अ मोबाइल फ्री डिनर, अ इंटरनेट टेलीविजन फ्री डिनर। सिट टुगेदर, talk to each other, fight with each other, argue with each other, understand the feelings of each other, look at the emotions that we are going through। चेक करिए अपनी लाइफ को। एक एक व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर बैठा है, जो हम एजुकेशन देते हैं, उस एजुकेशन से पहले अपने मन, अपने जीवन को देखिए, अपने स्वयं को जीवन को देखिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आज मुझे इतना समय मिल पाता है कि मैं अपने घर के अंदर भी बैठकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाऊं। आज एक ही घर में दोस्तों हमने अनेकों घर बना लिए हैं, थैंक्स टू दिस शकुनी मामा, which is there with all of us। एक घर के अंदर अनेकों घर, यहां पर भी बैठे हैं लोग, लगे हुए मोबाइल पर, व्हाट्सएप फेसबुक कंटिन्यूअसली। वी आर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजीज। बच्चे और माँ बाप कनेक्ट करते हैं कैसे? मोबाइल और फेसबुक के द्वारा। हेलो मम्मी, हाउ आर यू, ऑन व्हाट्सएप। मम्मी नीचे बैठी है, वो दूसरे कमरे में बैठे हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट? थ्रू टेक्नोलॉजी। दोस्तों, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एडवांसमेंट दैट वी हैड ड्रीम्ड ऑफ इन आवर लाइफ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम जरूर करेंगे ये बात। फिर मैंने दूसरी बात उस यंग लड़की को बोली, मैंने कहा देख, तेरे हस्बैंड को मैं डिस्चार्ज करूंगा, लेकिन एक शर्त पर ओपीडी में देखूंगा, केवल एक शर्त, और वो तब जब तुम उसको हाथ पकड़कर मेरी ओपीडी में लेकर 1 महीने के लिए आओगी। एंड शी वाज स्माइलिंग। शी सेड, सर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर कर दूंगी, केवल 1 महीने के लिए। मैंने कहा 1 ही महीने बाद तो तुम सेपरेट हो जाओगे। आई डिस्चार्ज देम। दे स्टार्टेड कमिंग टू माय ओपीडी। दे केम फॉर फर्स्ट वीक। That first week changed to 2 weeks, 2 weeks to 3 weeks, 3 weeks to 4 weeks, 4 weeks to 4 months, 4 months to 4 years। उनकी 4 महीने की बच्ची दोस्तों 4 साल की हो गई। वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं मुस्कुराते हुए, और दोस्तों they have withdrawn their divorce papers after that। That is the day I realized that life is not about केवल गिवन दोस्तों जो ज्ञान देते रहते हैं, it's about understanding the true essence of relations। ये रिलेशंस दोस्तों केवल हमारे परिवार में नहीं बनते। जिस मंदिर में जो आज आप सीट पर बैठते हैं, वो भी एक सुंदर ऐसा परिवार है जहां एक एक बच्चे, एक एक व्यक्ति के साथ आप मन और संकल्पों के द्वारा कनेक्ट करके उनके जीवन को दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। हैरानी होगी आपको सुनकर दोस्तों, आज 150 केस मैं एक हफ्ते के अंदर ऑपरेट करता हूं, और आप जानते हैं कि यंगेस्ट बच्चा जो मैं ऑपरेट करता हूं हार्ट अटैक का, वो 16 से 17 साल की उम्र के अंदर होता है। 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे भी आज मेरे पास हार्ट अटैक लेकर आ रहे हैं। इज दिस द एजुकेशन सिस्टम एंड द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैड ड्रीम्ड ऑफ? दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम दोस्तों। That is the day I started conducting experiments, and each one of you must see this दोस्तों। आप लोगों के दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। I took 150 young children of massive heart attack between the age of 18 to 35 years only, और मैंने केवल उन हार्ट अटैक के बच्चों के तनाव को मेजर किया, और तनाव को मेजर करने के बाद उनका ब्लड सैंपल लेकर उनकी जेनेटिक यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया। एंड लुक व्हाट वर द रिजल्ट्स, यू वुड बी सरप्राइज दोस्तों। इन बच्चों की शारीरिक उम्र 18 से 30 साल थी, लेकिन इन बच्चों की जेनेटिक एज थी एक 60 से 90 साल के बुजुर्ग के बराबर। कैन यू इमेजिन? In that body of 18 to 30 years, we had a child whose genetic makeup was equal to a 60 to 90 years. Their genes were completely destroyed and it was fast expressing. And what was the reason? The reason was not other factors. What we saw was these children had highest level of psychosocial stress in their life. Highest level of psychosocial stress. The slide change is working. Can somebody help me with this? Or the anybody on the dais now?
So you would be surprised that these children had a bodily age of 18 to 35 years, but a typically a age which was genetic age which was 60 to 95 years. This is not possible. No, that's not possible. Yeah. That was the problem. 60 to 90 years, and when I further studied and analyzed, you would be surprised that these children had highest level of psychosocial stress, lack of love, lack of happiness, and lack of joy in their life. That was the problem. That was the major challenge in their life. They had severe level of anger, severe level of psychosocial stress, severe level of lack of love in their life. Can you go on the next slide, please? Next slide, please. Next slide. Next slide. Look at this. 91% had highest level of. You will change it. That will be better. Next slide, please. And look why it is important. Because back, please back. Please back. Please go back, please. We have another slide changer that we should. Next slide, please. Okay, इसको रखने दीजिए. So look at what happened. When please go back. Please. Look at this. Why? Because those people who had stress in their life, those people who had lack of love and purpose in their life, look at this. Their telomerase enzyme was significantly less, and their telomere length and genetic length was significantly depressed. On the contrary, those people who had love in their life, who had positive outlook on their life, those people who had happiness and gratitude in their life, their telomerase enzyme was increased, and their aging and depression and genetic length was significantly higher. That is what I want to tell you. The quality of your thoughts can actually reverse your aging. It's only and only about your perspective that you develop in your life. Next slide, please. So your genes can completely, next slide please, can change your life. If you change the way you look at things, the things you look at change. If you change the way you look at people, people you look at change. And if you change the way you look at situations, situations you look at change. Everything is completely dependent on our own mindset and on our thoughts, my dear friends. That is what I want to do. Look at this. Merely by changing your thoughts and inculcating love, you can completely change your destiny. आज अपने बच्चों और एजुकेशन सिस्टम में उनको अपनी एजुकेशन के साथ साथ उनको इमोशनली स्टेबल बनाना आज बहुत बहुत आवश्यक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is what Dr. Robert Waldinger showed. The world's longest study, which is called the Grant and Glueck study or the happiness study, that the single most important factor in 700 children who had followed up for 75 years, what was responsible for their successful and happy life was not their money, not their position, not their power. It was only and only, next slide please, was only good relations in there. Develop this. This is what we need in our life. We don't need people who are just successful. We need people who are emotionally stable. We need people who are emotionally empowered in their life. Next slide, please. That is why my message to you is take out time to spend time with children. Connect with them. As parents, as teachers, take out time. Has those sessions where you can emotionally understand the feelings which a child is undergoing. You can make them empowered. You can make them feel the way they are feeling. And that is very important. That is why. So it's time to move back from high tech to high touch in our life.
lives, to have that compassion in our lives, to have that joy in our life. That is very, very important in our life. Next slide, please. My second message to you. Next slide, please. Next slide, next slide, next slide, next slide, ma'am. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. Can my thoughts affect my body also? Is it possible that my thoughts can actually affect? विचारों के द्वारा हम अपने शरीर की भी प्रोग्रामिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं. And what he did was, next slide please, he conducted an experiment in more than 300 people, and what he did was he taught them to play piano. In the two groups to play piano, the one group was actually taught to play piano by their hands, and on the contrary, the second group was just imagined to play piano, whether they were just thinking that they are playing piano, and he imaged their brains to see what were the changes that were occurring in their brain. Next slide, please. Look at what happened. Those people who are actually playing piano with their hands, on the contrary, those people who were only imagining that they were playing piano, the changes occurred similarly in brains of both the people. How is it possible? Merely by thinking, we can actually program the brains of different people only by creating a positive thought. Next slide. This is what I want to tell you, that today, by repeated and positive and affirmative thinking, we can program the brains of different children. This is called, next slide please, neuroplasticity. Do we have a slide changer? Another slide changer? Please bring it. Please bring it. This is very important. Next slide please. Look at this. Merely by repeated thinking, what you are doing is you are continuously strengthening the brain pathways of your children. That is why having a positive environment, repeatedly thinking positive, affirmations for the children is what is going to program their mindset for success and for joy. बार बार बच्चों को कोसना, बार बार बच्चों को डांट लगाना, बार बार बच्चों के लिए नेगेटिव सोचना, केवल सोचना भी, नेगेटिव एफर्मेशंस भी देना, वो भी उनके ब्रेन को नेगेटिवली प्रोग्राम कर देता है. This is what Dr. Eric Kandel shows. Nerve cells that fire together, they wire together. What you are thinking repeatedly can completely change your thinking and your body. Next slide, please. This is the power that we are gifted with. My third story is the power of purpose. I was always a good badminton player. And it was 21st March 2013, I used to play a state level badminton that I suffered a major injury. And at that time, I was unable to even get up from the floor. I was lifted and taken to my home and was advised bed rest for 6 months. Every day, I just visualized myself playing badminton. Every day I wanted to come back to the court and play badminton. I was not looking at the disease. My neurosurgeon friends, my orthopedic friends said, Dr. Gupta, this is not feasible. आपको major injury हुई है. Now you have to be on bed for a long time and you will be able to do only normal work. I said, no. I want to come back, I want to play, and for 7 to 8 months they didn't do anything on me. They made me just lie down on the bed, and I was having severe pain which was radiating down my leg. And ultimately, getting tired, next slide please, I got myself admitted on 18th January. On 19th January, I was operated 2014, and this was my picture on 20th January. Look at the joy on my face. Because I knew that now I'm going to get back. I knew every day I was visualizing court, and on the second day only, I took discharge from the hospital. I drove back to my home, and within 3 days, I started walking, getting out of my bed. Within 1 week, I started moving out of my home and started taking a walk in the park. And within 1 month, I rejoined my hospital. I was able to perform my operating duties. And within 6 months, after a lot of physiotherapy, I was again able to walk for almost 8 kilometers. And my dear friends, after 1 year, I was able to jog for 10 kilometers, and down the lane, after 10 years now, I'm able to jog for 32 kilometers, play badminton, and do all the activities. What I want to tell you, next slide please, is that the person who has a why to live in his life can deal with anyhow. Develop a sense of purpose in your children. This is my spine. Next slide please. Have a purpose. A life without a purpose is like a body without a soul. We must have that joy. We must have that purpose in each and every child. Every child have their different talent. Next slide, please.
While we all learn to spiral in the problems of life, while we all learn to revolve in the problems in the life, my dear friends, problems is a part of our life. But my message to you and my message to each one of your teachers and school children is that learn not to just spiral in the problems. Next slide, please. Learn to evolve out of those problems while you are facing these challenges in your life. That's the art of living. That is the power of resilience that each one of us is gifted with. That is the power of thought that each one of us is gifted with. Next slide, please. My fourth story. And the fourth story is the power of belief. Whatever you want in your life, it's on its way. I've always been a firm believer that your life is completely a manifestation of your thoughts. When I came back from America in 2001, at that time, I wanted to do cardiology, and there were only 5 seats of cardiology in the country. And listen to this very beautiful story. At that time, my teachers and my seniors were giving exam, and they knew that nobody is going to clear this exam in first attempt. I went to my mother, who's a gynecologist, and said, कि मम्मी, it is very difficult कि इस exam को मैं clear कर पाऊंगा. I've come back from America to stay with you, and I will give only one attempt. मैं केवल एक attempt दूंगा, and if I'm able to clear this particular exam, it is fine. नहीं तो I will practice MD medicine. And you know what she said? She said, come here and talk to me. I said, what? She said, how many seats of cardiology are there in the country? I said, 5. She said, how many do you want? I said, only want 1. She said, focus on 1 and delete rest of the 4 seats. I went back to my room. I remember that Wednesday evening, I wrote on my book that 1 seat is for me. I wrote in the front of my desk, ये एक seat मेरे लिए है. And दोस्तों, 19th July 2001, I started studying cardiology. I studied for 5 months, and 9th February 2002 was my entrance exam. 5,000 people, all specialists giving the exam. It was in Delhi University. 3 hours exam, 100 questions paper. I gave from 9:30 to 12:30. I came out, and when I came out, what do? As soon as you come out, you immediately start discussing with people कि इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है. And you know, people told me, Dr. Gupta, आपको जो भी चीज चाहिए आप हमसे मांग लीजिएगा. By 7:30 in the evening, we will send you a 100 question paper with answers so that you can give your paper better next year. I was disheartened. I went back home after a haircut. I put all my books aside and I started waiting for a result because I knew I'm not going to give second attempt. I've given my best this time. 15 days later, when the result came, my rank in the country was first. My percentile was 95%. I still remember at that time. And the second, third, and fourth rank was 78, 77, 76, and 70%. People call it magic. I call it the power of manifestation, my dear friends. Program the mind of children. Program your mind that success is your birthright. In those 5 months, I was already believing that I have become a cardiologist in my life. I manifested this. I tricked my brain, my amygdala, my emotional center that put full stop to the thoughts of uncertainty. आज होता क्या है? आज यही तो होता है, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुश्किल लगता है नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और वो मैनिफेस्टेशन, वो अनसर्टेनिटी हमारे रैशनल ब्रेन को, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग ब्रेन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है. चेक योर वोकैबुलरी व्हेन यू टॉक टू पीपल एंड चिल्ड्रन एवरी मोमेंट. Check your vocabulary. Today, every day in my life, I design my day the way I want. I manifest the things the way I want. That's the power that we are gifted with. Next slide, please. This is the power. I want to tell you. And next slide, please. Next slide, please. Whatever you want to create outside must first be created in your brain. जो भी चीज बाहर देखना चाहते हो, राइट इट डाउन, टेल योर चिल्ड्रन, टेल योर होल सिस्टम. जीवन में जो भी चाहते हो, सक्सेस इज ऑलरेडी ऑन योर वे. यू हैव टू मैनिफेस्ट इट बाय बिलीविंग इन इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड positive thinking, and why we are not able to do it? It is because of the emotional imbalance. Next slide please. Because of the catastrophic thinking. Next slide please. Next slide please, ma'am. Next slide please. Because our brain is working like a projector.
When we magnify negative things, when we keep on thinking about negative things, what happens is the negativities are magnifying in our life. That is the message I want to give you, my dear friends. Believe in the power that your magic can be created. Your children, your schools, your education system has the power to create children who are resilient and who can create magic in their life. Next slide, please. My fifth story is the power of consistent child. Don't aim. Capacity building workshops are not going to lead us anywhere. It's the consistency that builds the capacity of a child. That is what I want to tell you. When I came back in 2001, at that time, I was 97 kgs in weight. I was suffering from diabetes, I was suffering from thyroid. Next slide, please. I was suffering from fatty liver. And look at this, my picture at that particular time when I came back from America. This was my actual pictures in 2001. I was having so much fatty liver and multiple problems in my life. And one of my uncles, he came back to my home and said, Dr. Gupta, you want to become a cardiologist, you should look like one. Cardiologist बनना चाहते हो तो cardiologist जैसी personality भी होनी चाहिए. And those words were like an arrow for my heart. मन को और बुद्धि को तीर की तरह लगे. And 19th July 2001, I completely changed my diet and exercise program. Every single day, I started exercising and changed the diet from quantity to quality. And 6 months while I was studying for my cardiology entrance, on the day of my entrance, 9th February 2002, next slide please, I lost 23 kgs of weight. I regained a whole new personality. My diabetes, my thyroid, my fatty liver disappeared. That was not was for achievement. The achievement is, next slide, till today, May 2025, I maintain the same schedule every day in my life. That's the power of consistency. If you teach your children to be consistent, doing extraordinary things sometimes is not going to make you great, but doing ordinary things in a simple and an extraordinary way is what is going to make your child achieve magic in your life. That is what you want in a life. If you want to perform, make them perform brilliantly, ask them to be consistent in every single aspect of their life. Next slide, please. Next slide, please. My seventh message to you. Next slide, please, ma'am. Next slide, please. Can my thoughts affect my healing also? Is it possible? क्या मेरे विचार मेरी healing के ऊपर भी effect कर सकते हैं? The answer is yes. The answer is yes. Look at this. The studies by Dr. J.B. Mosley have clearly shown that केवल संकल्पों के द्वारा हम अपने शरीर, अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं. He did fantastic experiments. He took 2 groups of patients who had knee pain. और एक ग्रुप की इन्होंने एक्चुअली सर्जरी की, उनको बुलाया, उनके नी को ओपन किया, उनको एनेस्थेटाइज किया, उनके नी को रिपेयर किया और क्लोज किया, और दूसरे ग्रुप को बुलाकर उन्होंने उनके नी को केवल ओपन करके क्लोज किया without touching their knee, and both the groups were informed that their surgeries have been done and they were followed for the pain improvement. This was published in one of the top journals of the world. My dear friends, what were the results? You would be surprised that the pain improvement was similar in both the groups. जिन लोगों की सर्जरी हुई और जिन लोगों की नहीं हुई लेकिन उनको बताएगा कि उनकी हो गई है, why? Because their thoughts created so much positive and powerful energy that they were able to heal themselves, and the pain releasing chemicals were significantly less. That is what I want to tell you. When you increase the self-esteem of a child, you know that the child is underperforming. You know there are problems with that particular person. You increase the self-esteem. You program the mindset of the child. Naturally, by consistency, their performance and their ability to achieve success goes up significantly. That is what is the power that each one of us is gifted with. Next slide, please. Even in the serious diseases, look at this. Even in the serious diseases, next slide, this gentleman, Mr. Stomatus Moratus, look at this fantastic story. He was diagnosed as terminal lung cancer. And in this terminal lung cancer, he was given only few months, 3 months to survive. इन्होंने कहा यार अब मरना ही है. And with biopsy proven lung cancer है, let me go back to my town in Ikaria, where I will be able to spend time with my family and friends, and even if I die, the burial in America would be costing $300 और वहाँ केवल 10 से $15 के अंदर मेरा काम हो जाएगा. He went to town Ikaria and he started planting vineyards. He started meditating.
He started having a positive lifestyle. He started connecting with people, and those 3 months passed, changed into 6 months, 6 months into 60 months, and almost 5 years passed. And he thought, "यार मुझे तो मरना था, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ? Why am I not dying?" And when 10 years passed, he took a flight to America. Next slide, please. To meet all his doctors that why he is still alive. And he was surprised to see all doctors who diagnosed him with cancer were dead by that particular time. They were dead by that particular time. These are all true facts. And he came back to his town called Ikaria, and he lived up till the age of 102 years. Next slide, please. And this man is called the man who almost forgot to die. And next slide, the place where he lived is called the island where people forget to die. Why? What is common amongst these people? Next slide, please. Is the meditative lifestyle, a good sleep and natural connect, positive thinking, and disconnecting from the unnecessary technology, my dear. That is what we are gifted in. Do we have a slide changer man now? It's coming? No? You don't know? So that is the power that each one of us is gifted with today. That is what I want to tell you. Next slide, please. Next slide. This is what happened with me. Next slide. When I was suffering from my brain illness, next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Next, ma'am. Next. Ultimately, my whole ordeal ended up in a major brain surgery on 20th June 2005. 20th June 2005. Next slide. After the surgery, I thought, I'm absolutely fine. And look at this. Only 6 months later, when I was thinking that I'm absolutely fine with the right portion of my brain removed, I developed another lesion in the cerebellum, which was not amenable to surgery. I was again seeing my death too close with 16 tablets every day. Doctors from America, from Bangalore, from Delhi, everywhere saying that the surgery cannot be done. And I knew I had to do something. That is the time I took up to meditation and positive thinking, my dear friend. And for 1 year, I practiced meditation. Every day, I used to get up at 3 a.m. in the morning. I used to complement my medicines with meditation every day, creating those affirmations, cleaning my brain, thinking that my brain is completely disease-free. Next slide, please. And after 1 year, my brain scans were done. Only and only with meditation. Look at this. My brain completely cleared off with all the disease, my dear friends. Next slide. What I want to tell you is today, 50 trillion cells. Next slide, please. 50 trillion cells of your body, they are behaving like a philharmonic orchestra, and you can completely change next slide please, you can completely program your body only and only with your thoughts, and you can create healing energy. Sankalpon ki shakti hai, my dear friends. That is what I want to tell you. That you can create magic only and only by the power of thoughts that you have. Next slide please. My second last message to you. Ma'am, next slide please. Next slide please. Next slide please. Next slide please. Our thoughts can also affect our relations. Our thoughts can also change our behavior and our relations. And today, this is very important. Why? Because every day we are grossly affected by the behavior of the people. Grossly affected by the behavior of the people. एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हमें अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं. टुडे व्हाट हैपेंस इज, इफ समबडी इज सेइंग समथिंग रॉन्ग टू अस, व्हाट हैपेंस इज वी आर पुटिंग दैट गार्बेज इनटू आवर माइंड. उस चीज को हम अपने मन में रख लेते हैं. चेक करो अपने मन को. एवरी डे एवरी सिंगल पर्सन, हम जितने भी बातें करें, आज एक मन के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध का आना, इरिटेशन का आना, बार बार ईर्ष्या और घृणा का आना, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन का आना, क्रिटिसिज्म का आना, कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस का आना, ये सब भावनाएं आज हमारे अपने मन के अंदर आ चुकी हैं. एंड वी आर टीचिंग पीपल. एक व्यक्ति जो आज इस ऑडिटोरियम के अंदर है दोस्तों, एक व्यक्ति अभी अपने मन को चेक करो. वो मन जिस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर क्रोध है, और वो हृदय जिसके अंदर घृणा है दोस्तों, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है. व्हाई? बिकॉज आध्यात्मिकता का नाम, अपनी रियल एजुकेशन का नाम ही है अपने मन की भी सफाई. We need to clean ourselves of all this body. एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे. मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताता हूं. एक एक्सरसाइज सभी लोग मेरे साथ करेंगे, यस और नो? एवरीबॉडी विल डू दिस फॉर 3 days. यस एवरीबॉडी? पक्का करेंगे? वेरी सिंपल एक्सरसाइज.
बहुत सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आज के बाद जब आप लोग आज घर जाएंगे 3 दिन के लिए केवल आपको एक काम करना है। करेंगे सभी लोग? यस यस हाथ उठाइए, करेंगे। इनका वीडियो निकाल लो यार, एविडेंस होना चाहिए ना, बाद में कहीं नहीं मना ही हमने तो करा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, केवल 3 दिन के लिए। आप जब घर जाएंगे, कल घर की सफाई होगी, बाथरूम की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी, बेडरूम की सफाई होगी, ड्राइंग रूम की सफाई होगी। 3 दिन के लिए घर के सारे कूड़े को संभाल कर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करना है, दैट्स ऑल। डन एवरीबॉडी? अरे हंस क्यों रहे? अभी आपने हाथ उठाया था भाई। एवरीबॉडी, ओनली प्रिंसिपल विल डू, तभी तो टीचर्स और बच्चे भी करेंगे। यस और नो? यस यस और नो? व्हाई नो? व्हाई नो? क्योंकि बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा, घर का डेकोर खराब होगा, इसलिए घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी। एवरीबॉडी, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज होती है तो मन की सफाई 20-20 साल क्यों नहीं करते हैं? अपने आप से पूछ कर। हम दूसरों को पढ़ाने जाते हैं, कभी अपने मन के लिए भी पॉलिसीज बनाओ। दूसरों के लिए दिनचर्या बनाते हैं, अपने मन के लिए भी मनचर्या बनाओ। अपने मन को भी साफ करो। अपने मन के अंदर क्रोध को हटा के लव को एम्ब्रेस करना, अपने मन के अंदर घृणा को हटा के कंपैशन को एम्ब्रेस करना। बच्चे सब एक समान नहीं होंगे, टीचर सब एक समान नहीं होंगे, सिचुएशंस एक समान नहीं होंगी, लेकिन मेरा मन हर एक के लिए समान रहेगा। मेरा प्यार, मेरा कंपैशन, मेरी किसी दूसरे के प्रति करुणा कभी किसी के लिए व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी। That's the art of being a great leader. Leaders don't become great because they are doing great things. They become great because of their beauty and power to empower others to come to the same level, my dear friends. That is what you all are gifted with. इस मन के अंदर ही दोस्तों राम और रावण है, जिसको पानी दोगे वही बढ़ता चला जाएगा। Today we must nurture our children to become powerful and lovely in our life. दोस्तों, this is the message that I want to give you. That today you have the power to unlock your powers of mind, the God gene within you. You have the power to create difference. 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं, and today from this stage I am just requesting you to take out 20 minutes to empower your mind. अपने मन को प्रोग्राम करो, अपने मन को पावरफुल बनाओ, अपने मन को शांत करो। हॉस्पिटल का, अपने एजुकेशन सिस्टम्स का, अपने स्कूल्स का एनवायरनमेंट इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस एनवायरनमेंट के अंदर आए, उसको लगे कि जैसे ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है या स्ट्रेस नहीं है, इट्स लाइक अ टेम्पल ऑफ हीलिंग, इट्स लाइक अ टेम्पल ऑफ जॉय। इस प्रकार की एनर्जीज को बनाइए कि द मोमेंट यू स्टेप आउट, चिल्ड्रन आर नॉट fearful, they are in an ocean of love and joy. That is the energy that you have to create in your own life. And meditation and silence is one of the most powerful ways to do it. Have a powerful, neutral, very simple silence room. Talking to the children, empowering their minds. Not just their mobiles, but empowering their minds, inculcating the love, the joy, the peace, the purity. This is the power of silence. This is the power of thoughts. When we are feeding our mind with lot of happiness and joy and peace, we can create and design our own destiny. Look at this, what happens to our brain. When we analyze your brain by magnetoencephalogram of a normal person, both the hemispheres are imbalanced, my dear friends, and this brain is prone to anxiety and depression. And look at this, what happens with 15 minutes of silence and meditation. Only 15 minutes. This is the synchrony that is created in both the brains. Both right and left hemispheres are empowered to create a more integrated and optimized mental and emotionally healthy system. This is the magic that you can create by your thoughts, my dear friends. Don't create people who are intellectual, who are working only with left brain, who are good only in their subject, who are strategic and analytical, but empower your children to be loving, to be passionate, and to be creative, because your right brain is what controls your left brain. Remember, those people who are creative, whose right brain is functioning, their success and performance is 70 times better than those people who are only intellectual, and their fulfillment in life
in their whole journey is almost 2 times better than a normal person. My dear friends, I don't know whether we are going to meet again or not. But today, take this message. Take this message that this is the right time to revamp our education system. Not revamping our education system by changing the books, by changing the syllabus, but by changing our own mindset. Each one of you who's a leader in their own self have to redesign and reinvent your own mindset. अगर एक संकल्प आपका परिवर्तित होता है, उस संकल्प के द्वारा आपकी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब आपकी दृष्टि परिवर्तित होती है, तो उस दृष्टि के द्वारा आपकी कृति परिवर्तित होती है। जब आपकी कृति परिवर्तित होती है, तो कृति से आपकी वृत्ति परिवर्तित होती है। और जब आपकी वृत्ति परिवर्तित होती है, तो उस वृत्ति के द्वारा आपकी संस्कृति और आपकी सृष्टि भी परिवर्तित दोस्तों हो जाती है। That is the power that keeps मैं आपको केवल एक ही बात कहूं कि आप जैसे ही लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए थे और उस महात्मा के पास जाकर उन्होंने यही बोला कि हमको टाइम नहीं लगता है, कौन करेगा, टाइम किसके पास नहीं है, जो चल रहा है उसको उस प्रकार से चलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कब हमें अपने जीवन के अंदर स्टेप्स लेने चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, आपको जैसा करना है करो, केवल अपने मरने से पहले परमात्मा को याद करना, अपने मन को चेंज करना, आपकी लाइफ हमेशा के लिए सुधर जाएगी। एंड दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा केवल एक दिन, उन्होंने कहा केवल एक दिन से ही परिवर्तित हो जाएगी, एक संकल्प से परिवर्तित हो जाएगी। दे वर वेरी हैप्पी। दे स्टार्टेड लिविंग द हॉल। पर उनमें से एक व्यक्ति वापस मुड़ा और बोला, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो वो तुरंत बोला, फिर आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। My dear friends, the time to change is now. The time to change is now. This moment is not going to come to you. आज मैं आप सब लोगों को एक संकल्प दिलवाता हूँ। आज एक संकल्प हम सब लोग करेंगे कि आज के बाद स्ट्रेस वर्ड, एंगर वर्ड, नेगेटिविटी वर्ड, इरिटेशन वर्ड को हमारे एजुकेशन और स्कूल सिस्टम से डिलीट करना है। आज के बाद एक सीबीएसई का एफिलिएटेड स्कूल जिसके आप कर्णधार हैं, जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जब आप जाएंगे तो उसको स्ट्रेसफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एग्जाम है, बहुत प्रेशर है नहीं, केवल पैशनेट इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्योंकि जहां पैशन है वहां प्रेशर नहीं होगा, और जहां प्रेशर है वहां पैशन नहीं होगा। दोस्तों, पैशनेट इंस्टीट्यूट वहां, जो स्ट्रेस फ्री इंस्टीट्यूट है, जो लविंग इंस्टीट्यूट है, एक एक टीचर खुशियों से भरा हुआ, एक एक व्यक्ति ऐसा जो प्यार की सरस गंगा की तरह बहता हुआ, कि बच्चा किसी भी प्रकार का आए, उसका मन, उसका जीवन उस एनवायरमेंट के अंदर दोस्तों परिवर्तित हो जाए, वो चेंज हो जाए। ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। केवल किताब पढ़ाकर उनको डिग्रियां देने से हम इस संसार का, इस जीवन का परिवर्तन दोस्तों नहीं कर सकते, इस राष्ट्र का परिवर्तन नहीं कर सकते। बच्चों के माइंडसेट का परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें स्वयं के माइंडसेट को भी आज प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक संकल्प को परिवर्तित करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूं कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। अपना जीवन, अपना मन हमेशा मुस्कुराते रहो। कभी भी चेहरे और जीवन पे क्रोध ना आए। क्या पता आपकी एक मुस्कुराहट उस बुझते हुए दीपक की ज्योति को जगा दे। क्या पता आपकी एक मुस्कुराहट उस बुझती हुई आस के अंदर एक सुंदर आशा को जगा दे। क्या पता आपकी एक मुस्कुराहट उस होपलेस बच्चे के अंदर उस आशा के दीपक को प्रज्वलित करके उसके जीवन को बना दे। दोस्तों, निकालिए अपना मोबाइल अब और इस पिक्चर को क्लिक करिए, और ये पिक्चर यही कहती है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज के बाद आपका ये जीवन, आपका ये स्कूल, आपका एजुकेशन आपके अपने संकल्प के हाथ में होगा। दोस्तों, यदि आज आपने परिवर्तन कर लिया दोस्तों, तो आपके द्वारा हजारों नहीं लाखों बच्चों का भविष्य परिवर्तन हो जाएगा, उनका मानसिकता परिवर्तन हो जाएगी। दोस्तों, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उनका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा, और ऐसा जीवन ही श्रेष्ठ और आध्यात्मिक जीवन का, इस आध्यात्मिक क्रांति का दोस्तों स्रोत है, जिसको आगे वो बढ़ा सकता है। दोस्तों, हम केवल आधे मिनट साइलेंस में बैठेंगे, और इस आधे मिनट साइलेंस में बैठकर हम सब
अपने मन की शक्तियों को जागृत करें, अपने आप को एक संकल्प लें। सब बहुत शांत, केवल संकल्पों को देखें। देखिए अपनी अद्भुत मन की शक्तियों को, अपने संकल्पों को। मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर इरिटेशन, मन के अंदर सब नकारात्मक भावनाओं को सदा के लिए समाप्त, उस परमात्मिक प्यार और शांति को, उस स्नेह, उस आनंद को अपने अंदर अनुभव करें। एक एक संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली, एक एक संबंध प्यार, एक एक संबंध शांति से परिपूर्ण। विजुलाइज करें अपने स्कूल को, उसकी एनर्जीज को, सब जगह खुशी और आनंद, पावरफुल शक्ति का प्रसार करें। संकल्पों की श्रेष्ठ शक्ति, विजुलाइज करें जैसे एक एक बच्चा जागती ज्योत, एक एक बच्चा ओएसिस ऑफ जॉय एंड पीस, खिलते हुए गुलाब की तरह, निखरते हुए कमल की तरह, कीचड़ में भी रहता हुआ कमल। इन शक्तियों को ग्रहण करते हुए, मन को श्रेष्ठ बनाते हुए, आज का ये दिन मेरे बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा। शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया। Thank you so much, sir. I now have the honor of welcoming someone whose life is not just a story, it's a movement of transformation. Shri Devendra Kumar is the founder of the Ladli Foundation, an organization that has empowered thousands through its work in education, gender equity, and change from resilience to impact. So please join me in welcoming Shri Devendra Kumar, sir. Sir, the stage is all yours.